आज फर्स्ट डे हम लोग पहुँचाने दे रहे हैं। नाहरलगुन का बस में चढ़ा था लेकिन हम ईटानगर का बस में चढ़ के आ गया। So now let's get ready for college. So today is my first day. I was unable to open this bottle, so मैंने यहाँ पे water put है जहाँ पे इसको and it is really effective, especially for tan skin. It's great investment, so I bought this for buy one get one free, so that was more worth it. Although one of my packets was taken by my younger sister, you know, she got a good yeah, I'm going to use this. My savior. Something that I want to say is if you have a dull eyeliner, then this is a must-have. It's not expensive or something. I have been using it for like now 6 to 7 months, and this has been very effective. And if you have odor in your outfit, then this is a must-have. So yeah, you guys should try too, because it's better to invest in something versus because for stay user to stay. It's $4.99, but if you buy one get one free, then you are on, you know, profit. So try to find the deals, you know, जब चलता है तो आप extra ले लिया करो so that you can use it. So I bought this for buy one get one free, and one is with my sister. और हमको भी कहते हैं घर में ले लेते हैं. So this mascara is actually really good, as you can see the volume in my eyes. यूनिवर्सिटी के लिए
हमको कुछ समझ नहीं आ रही कि व्हाट शुड आई वेयर, तो हम पहन लिया जो भी था। अभी निकलेगा हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज फर्स्ट डे हम लोग पहुँचाने दे रहे हैं बिकॉज बस कहाँ पे रुकता है यहाँ पे आइडिया नहीं है, तो आधा समय बस में आएगा। Except for one person, I think Pion uncle है, who's opening talas. So this is how classroom looks like. क्लासरूम ढूंढ रहे हैं, I don't know कहाँ है। एक दीदी को पूछा या नीचे में, लेकिन she told me कि ऊपर हो सकता है, तो अब हम जाना ऊपर। To go in. Outside जब तक कोई बच्चा लोग नहीं आएगा तब तक के लिए फिलहाल हम जा रहे हैं वॉशरूम यूज़ करने। अच्छी वॉशरूम कैसे You got a mirror here. अभी चल रहा है ब्रेक टाइम, सो वी आर हियर। तो 2 क्लास बैठा है एंड आई वाज काइंड एग्जॉस्टेड, पर अब पीछे का दर्द हो गया बहुत दिनों पे ट्रैवल कर। अलग बस में चढ़ के आ गया। तो हमको नाहरलगुन का बस में चढ़ना था, लेकिन हम ईटानगर का बस में चढ़ के आ गया। और जो ईटानगर का बस में हम चढ़ा है वो जो क्या हुआ है बताएगा, अलग रूट से आ गया, जिसका वजह से अभी हमको चढ़ के जाना पड़ रहा है पैदल। तो अगर हम नाहरलगुन वाला में आए होने से हमको बस 5 मिनट चल के जाना पड़ता था, लेकिन अभी थोड़ा दूर हमको चढ़ना पड़ेगा। तो यह ब्लेंडर हो गया आज तो, मतलब इतना आदमी था कि हमको पता ही नहीं चला कि कौन सा बस में चढ़ना है। वो भैया को हम बोलेंगे नाहरलगुन तक जाना है, तो हाँ उठ जाओ बोला, तो हम उठ गया था। तो अभी हमको चढ़ के जाना पड़ेगा। सी यू देयर, बहुत गर्म है।